China's border. India with China's border. China's border here. Right? And if you look at China, how much we are sharing the border? The total length of the border with China, right, is 3488 kilometer. That we are sharing with China. And we have a disputed territory with China also there. One is the LAC side, other side. So I will go through it. So we are sharing a very long border with China. And we have several disputes with China with respect to the border. Right? So now if you look at it in this context, देखा जाए, so only with its border with Bangladesh is the second longest border. With China, India has got the second longest border after Bangladesh. Second longest border we have. Right? Now, so from Jammu and Kashmir, Ladakh, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Sikkim, Arunachal Pradesh. 5 Indian states and union territories, we are sharing the border with China. You can see the map here. Right from here. Right? We are sharing the border with China. And they are difficult terrains. Geographically, if we look at the difficult terrains. So let us look into here. We can divide our border with China into 3 sectors. We can divide into 3 sectors. One is towards Kashmir and Ladakh, western sector. Then we can middle sector. And then we can divide the third one towards the eastern sector. चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर लगा हुआ है, हम 3 भागों में बांट सकते हैं, पश्चिमी, पूर्वी और मिडिल. जहाँ जो स्टेट्स हैं, सारा चीज़ वी कैन अंडरस्टैंड अबाउट दैट. अब जैसे कि अगर पश्चिमी की बात करें, वेस्टर्न की बात करें, तो एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टेरिटोरियल जो क्लेम आता है, दैट इज इन टर्म्स ऑफ अक्साई चीन. अक्साई चीन, राइट? दिस अक्साई चीन, दिस इंडियाज क्लेम ओवर दिस अक्साई चीन, occupied by China. China has claimed this territory, Aksai Chin, which India claimed कि this is our land, which China has usurped. दूसरा कई बार आता है लद्दाख में, there is one very important lake, Pangong Lake, is a crossing through LAC, line of, this is called line of actual control. जहाँ पर है तो the Pangong Lake and the other side, Galwan Valley जो वहाँ पर आता है, जो डिस्प्यूट है. और कई बार आप न्यूज़ में पढ़ते हैं कि चाइनीज जो आर्मी है गेटिंग इनसाइड द इंडियन लैंड एंड मेकिंग द पोस्ट. काफ़ी ये मुद्दा रहा है हमेशा, तो वो पार्ट आता है. तो वेस्टर्न साइड में हम देखें तो लद्दाख का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट आता है. काराकोरम रेंज, राइट? काराकोरम रेंज एंड लद्दाख एंड दैट पार्ट बिकम टू बिकॉज पर्टिकुलरली अक्साई चीन, विच इंडिया क्लेम दैट इज आवर्स बट हैज बीन ऑक्युपाइड बाय चाइना. If you look at here, Uttarakhand side, middle, तो जैसे यहाँ पे एक जगह है लिपू लेक. So you know that Himalayan range, that China, Tibet, right? Tibet and India, and in terms of there are number of passes are there, right? The mountain passes which cross through LAC and through that area and then connect with the China part. Now here Lipu Lake, if you say small pockets of territory in dispute है, Sipki La and Lipu Lake. Now Sipki La, that is what you find in Himachal Pradesh, and then Lipu Lake, that is Uttarakhand. अभी मैं डिस्कस करूंगा. I will be discussing about Kala Pani. There is a place with Kala Pani. We have with Nepal also there, and at the same time Pithoragarh. There is a part of Uttarakhand, right, with China and Nepal. The part comes here. तो China के साथ भी यहाँ पर है Lipu Lake area है, and that's where where China claimed that area. Now if you look at eastern side, eastern territory here, this side, Sikkim, Bhutan, Tawang, Arunachal Pradesh. China claimed Tawang, and most of the part of Arunachal Pradesh, which is under India's control, right? China claim over that. This is their territory. And you know Indo-China War, 62 war, where China attacked India, and that was after the death of the Dalai Lama, Tibet. The holy Dalai Lama, who escaped from Tibet and came to India, took the refuge there. And in that context, the war, the China which attacked India, the claim of territory. So
कल लास्ट सेशन में मैंने बताया था, अंग्रेजों ने जब ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिश इंडिया जो रूल था, उन्होंने सिंपली बिना जोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के साथ केवल लकीर खींच दिया गया। आज भी ये ऐसे जो लकीर हैं, दोज काइंड ऑफ लाइंस और कंटेंशियस इश्यूज, डिस्प्यूट है जो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ है। राइट, इंडिया चाइना, सो मेनी टाइम्स वी हैव मीटिंग्स, but we have been not been able to resolve such disputes. And you know the dragon is always in terms of giving the historical ground. चाइना हमेशा अपने टेरिटरी को ऐतिहासिक पक्ष पे देता है, और चाइना का डिस्प्यूट केवल इंडिया के साथ ही नहीं है, इट्स विद जापान, साउथ चाइना सी, इज विद अ पार्ट ऑफ वियतनाम एंड दिस एरिया ईस्ट चाइना सी। और चाइना हमेशा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट में बात करता है कि ये हमारा ही पार्ट है, ये हमारा आइलैंड है, ये हमारा टेरिटरी है। तिब्बत पे भी जैसे चाइना अपना क्लेम किया हुआ है। राइट, सो व्हाट यू फाइंड हियर, इंडिया का तो डिस्प्यूट है ही, बट चाइना हैज डिस्प्यूट विद अदर कंट्रीज ऑल्सो देयर इन एशिया देयर। राइट, नाउ इफ यू लुक एट हियर, व्हाट आई वुड लाइक टू ऐड हियर, इफ यू टेक हियर, आई विल ब्रिंग सम important lines here. What you see right now in the map. Now you look at here. This is the Pakistani administered Kashmir. What do you call POK? Now this is Indian administered Kashmir. The present Kashmir what we have. Jammu and Kashmir. And now this is the part where we have Ladakh. Ladakh range. Ladakh. And then Aksai Chin, this part. Chinese administered Kashmir. Now I'll tell you here.